Good morning and thanks all of you. Be on time. I really appreciate that the morning 8:30 you all are there for this session. And I'll tell you about this session it'll be a really interesting topic which I've taken up. And with support of Bhatt sir and Mohan sir, along with Yuvraj, has helped me to make this presentation. And this is something which is on a day-to-day basis. What happens in and around us might be within our family, within ourselves, within our organization, within our friends, within our relatives. The word trust is something which is very important. I'll start this presentation. Actually, this is from a book by Mr. Stephen M.R. Covey. It's one of the famous author. And I'll start this presentation with a small video. Suppose a person broke the trust several times, how can we trust him again? If you're stupid, you can do whatever you want. You need to understand, trust does not mean somebody has to behave the way you expect them to behave. Trust means whatever they do, it's all right with you. If you come to such a state, otherwise don't use such a big word as trust. Trust means they must do what you expect them to do. This is a certain imprisonment, your trust. Trust should empower people. Trust should not limit people, isn't it? So your idea of trust is to hold them in the way you want them to be. So you trust, betrayal, this, that works. Don't get into all this nonsense. See, this was a small clip from Sadhguruji. Actually, इसमें एक चीज है, what we have to understand, कि trust is something which will help you to empower people. Empowerment चाहिए. Trust is something which is more important to empower people. आप जिस पे भरोसा करते हैं वो ट्रस्ट नहीं होता है या ऐसा नहीं होता है, बट इट शुड एम्पावर. आदमी को एम्पावर करना मांगता है. दैट इज व्हाट इज ट्रस्ट. Now, one more clip. In fact, I was seeing yesterday night. This is our. We all know Chandrayaan-3 was successful and was a great moment for all Indians. It's a proud moment for all Indians. But you remember Chandrayaan-2, when our great scientist, Mr. Sivan, has lost the mission. That time our Prime Minister was there beside him and he was patting on his back and giving a shoulder for him to cry. But he has trusted the entire ISRO team and told, okay, now we'll take it forward from here. And that trust what our government has shown towards the ISRO team has made this Chandrayaan-3 a successful one. Going further to know more about how to build trust, I'll start my presentation. Actually, trust means what? Trust means confidence. When we trust people, we have confidence in them, in their integrity and their ability. Trust क्या होता है? भरोसा और विश्वास. Trust का मतलब है भरोसा और confidence है विश्वास. And when we trust people, जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है. एक है इंटीग्रिटी एंड अदर वन इज एबिलिटी. इंटीग्रिटी इज नथिंग बट अपनी अखंडता और एबिलिटी इज अपना समता, जो हमारी समता है. एंड व्हेन वी डिस्ट्रस्ट पीपल, वी आर सस्पिशियस अबाउट देम. द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो ट्रस्ट पीपल इज फेल्ट. ये हम एक डिफरेंस ना, अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो दैट वी कैन फील इट. That is easily felt and it can be shown also. In high trust relationship, we can say wrong things, still people will accept it. मतलब जो भरोसा फुल करते हैं ना जिसपे, अगर वो कोई छोटी छोटी गलतियां भी करता है, फिर भी हम उसको हाँ ठीक है भाई चलता है, we just accept that, ठीक है, no problem. But in low trust relationship, despite precise communication, people will still misinterpret. हाँ, जब low trust होता है ना, आप कितना भी सही कर लो, आप प्रिसाइजली बहुत अच्छा भी करते हो, फिर भी लोगों के माइंड में एक आशंका रहती है, यार ये ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है. ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी है.
हमारे फैमिली में हो सकता है, हमारे दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है. दिस इज वेरी कॉमन अक्रॉस. गोइंग फर्दर टू अंडरस्टैंड, relationships of all kinds are built on and sustained by trust. हाँ जी, ये एक जो रिलेशनशिप होती है ना, जैसे मैं बोल रहा था, फैमिली का हो, दोस्तों के बीच हो, कंपनी और एम्प्लॉयज का हो, ये बिल्ट होता है ट्रस्ट के कारण ही, और सस्टेन भी होता है ट्रस्ट के कारण, बिल्ट होता है, और ये आगे चलता भी ट्रस्ट के कारण है. तो दे कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय लैक ऑफ ट्रस्ट. So trust in others will depend on how much we trust ourselves. हाँ, हम किसी पे भरोसा करने से पहले हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए. तो दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. फर्स्ट वी हैव टू ट्रस्ट अवरसेल्फ. हाँ, हम अपने काबिलियत पे, हमारे अपने खुद पे हमें भरोसा होना चाहिए. And if we can't trust ourselves, we will have a trusting others, hard time trusting others. अगर हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, तो दूसरों पे भरोसा करने के लिए भी हमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा भरोसा करने के लिए. This personal incontinence is the source of our suspicions about us. हाँ, ये जो भरोसा नहीं होता है ना, इसके कारण ही हम दूसरों पे शक करने लगते हैं. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए. वी जज अवर सेल्फ विथ इंटेंशंस एंड अदर्स विथ बिहेवियर. मतलब क्या होता है, हम अपने इरादे के लिए हम दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, और उनके बिहेवियर पे हम ज्यादा सोचते हैं. दिस इज वाई वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू रिस्टोर ट्रस्ट इज मेक एंड कीप कमिटमेंट टू अवर सेल्फ एंड अदर्स. हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसी का भरोसा जीतना है, ट्रस्ट जीतना है, तो अपने को हम जो कमिटमेंट करते हैं लाइफ में, घर पे हो जाने दो. जैसे आप बोलते हैं, आपके बच्चे अभी समझ लीजिए 10th में है, अगर आप बोलेंगे बेटा तुम ये करो, ये मार्क्स लेके आओ, तो मैं आपको ये दिलाऊंगा. तो अगर वो ट्रस्ट करके आप उनको वो दिलाते हो जो अचीव करने के बाद, तो दैट इज समथिंग विच हैज फॉर्म्ड ए much stronger, bigger trust. He starts doing or performing better. और दूसरों को हम उसी के हिसाब में we start understanding and behaving ourselves. हाँ जी, ट्रस्ट का दो इफेक्ट्स है. ये दो इफेक्ट्स क्या होता है, स्पीड एंड कॉस्ट. आपको दो चीज समझना बहुत जरूरी है. When trust goes down, speed will go down and cost will go up. Similarly, when trust goes up, speed will go up and cost will go down. इसका एक मैं क्लासिक एग्जांपल बोलता हूं आपको. हम सबने देखा था ना 9/11, जब यूएस में ट्विन टावर में प्लेन से अटैक हुआ था, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 में. तब उससे पहले क्या होता था, समझ लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लाई करते हैं कोई. तो समझ लीजिए मैं आज फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहा हूं, तो एक कार में जाता हूं, एयरपोर्ट में पार्क करता हूं, डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर, मतलब डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर जाता हूं, टिकट बोर्डिंग पास दिखा के फ्लाइट में चढ़ जाता था. तो मैक्सिमम टाइम मेरे को लगता था 10 मिनट से 15 मिनट फ्लाइट में, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने के लिए. आज ऐसा नहीं है. 9/11 होने के बाद क्या हुआ भाई, 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचिए, वहां पे हर हर कोने, हर प्लेस में आपको चेक इन होता है, आपका बैग होता है, हर चीज स्क्रूटनाइज होता है. और उसके बाद क्या होता है, ये टाइम, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है. तो इसमें क्या आपको अपने को सीखना है कि देखो, एक ट्रस्ट था, पब्लिक पे एक भरोसा था गवर्नमेंट का, वो कम हो गया. तो क्या हो गया, जब ट्रस्ट नीचे गया, कम हो गया, तो स्पीड भी कम हो गया. मतलब अपना टाइम जो है, टाइम बहुत ज्यादा लेने लगा, और कॉस्ट भी बढ़ गया. कॉस्ट कैसे बढ़ा, समझ लीजिए, अगर आप एयरपोर्ट में इतना सिक्योरिटी, इतना स्क्रूटनाइजिंग चलता है, तो वहां पे एयरपोर्ट में टैक्स स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने लोगों से लेना. एयरपोर्ट टैक्स, कन्वीनियंस टैक्स, ये जो हर चीज टैक्सेस ऐड होने लगे. सिमिलरली अगर यही फास्ट हो जाता, तो आपका ट्रस्ट जब रहता है तो स्पीड भी फास्ट होता है और कॉस्ट भी कम होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. These two aspects, speed and cost, are the two major outcomes of trust. I hope you people are understanding this.
See, dimensions of trust. There are two dimensions of trust. One is character, other is competent. अब हम सब सोचते हैं कि कैरेक्टर एंड कंपिटेंस क्या है. कैरेक्टर इज नथिंग बट अपना चरित्र, और कंपिटेंस है योग्यता. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए. बिकॉज कैरेक्टर क्या होता है, इज कांस्टेंट. इट इज नेसेसरी टू ट्रस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. मतलब वो कैरेक्टर होता है ना, वो अंदरूनी होता है. एंड कंपिटेंस सिचुएशन डिपेंड्स ऑन व्हाट द सर्कमस्टांसेस रिक्वायर. मतलब आपका कंपिटेंस लेवल वो अलग होता है. तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है. हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे. हाँ, इसको समझने के लिए पांच पांच वेव्स बोलते हैं, डॉक्टर कोवी बोलते हैं कि 5 वेव्स ऑफ ट्रस्ट है. इसमें पहला है, जैसे हम बोल रहे थे ना, खुद पे भरोसा, सेल्फ ट्रस्ट. सेकेंड इज रिलेशनशिप ट्रस्ट. थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, मार्केट ट्रस्ट, सोशल ट्रस्ट. तो ये क्या है, हर चीज हम एक एक करके समझेंगे. इसमें एक चीज हमको समझना चाहिए. देखिए, आज हमारे कंपनी में बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. जैसे मुकेश जी हो गए, अपना नीरज जी हो गए, बेनजीत हो गया. दीज आर आई थिंक द 3 मोस्ट. अपना दिलीप दा हो गया. These are some of the employees who are working from a very long time in this organization. Prashant. So there is some kind of trust which has been developed between our management और समझ लीजिए मोहन सर और हमारे इस एम्प्लॉयज के बीच में. ये क्यों डेवलप हुआ है? दे ट्रस्ट फुल्ली देम. कोई डिसीजन लेते हैं तो बोलते हैं भाई हाँ ठीक है, चलो हम भरोसा कर सकते हैं. जैसे पेमेंट्स का हो गया, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे, तो इस चीजों में हमें उन पे भरोसा करने लगे हैं. एक क्लासिक एग्जाम्पल, मैं कभी कभी भट्ट सर से बात करते रहता हूँ. भट्ट सर बोलते हैं, देखो शाह जी, मैं थोड़ा आराम की जिंदगी जीता हूँ बिकॉज मैं मोहन पे हर चीज छोड़ चुका, मुझे कोई चीज में सोचने की प्रॉब्लम नहीं है. इट मीन्स व्हाट, Bhatt sir has totally believed Mohan sir and given the entire organization under his control. So he is saying, I'm having a peaceful sleep. So that is what which has to be developed. We have to develop within our organization. चलो आगे चलते हैं. Let's see, understand what are each this, what are these waves. The first thing is self-trust. It deals with the confidence and we have in ourselves, in the ability to set and achieve goals, keep commitments, and also having an ability to inspire trust in others. हाँ, ये क्या होता है ना, सेल्फ ट्रस्ट. जैसे मैंने पहले बताया था, इट डील्स विद कॉन्फिडेंस. अपने ऊपर क्या भरोसा, कितना हम लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्फ. देन ओनली दिस सेल्फ ट्रस्ट कैन बी बिल्ट विद इन अस. इट मीन्स क्या, हम अपने लिए कुछ कमिटमेंट करते हैं. जैसे हम अपना गोल्स बनाते हैं. Now I think most of the managers have started making their goals. हम 5 गोल्स लेते हैं. वो क्या होता है, दैट इज योर सेटिंग, एंड वो अगर अचीव करते हो आप, इट मीन्स व्हाट, यू आर हैविंग ए सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग ए ट्रस्ट विद इन योर सेल्फ. कीप योर कमिटमेंट्स. आप जो कमिट करते हो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या आपके कस्टमर्स के साथ, दैट इज हैज टू बी फुलफिल्ड. वो खुद पे भरोसा होने से, दैट विल हैपन इफ यू ट्रस्ट, स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट. Next is relationship style. This is about how to establish and increase trust with others. हाँ, इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप ट्रस्ट होता है. जैसे मैंने इससे पहले बताया था, पापा और बच्चे का कहानी, हस्बैंड वाइफ का कहानी, फ्रेंड्स के बीच का कहानी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना बिहेवियर कैसा है. कंसिस्टेंटली हम अपना बिहेवियर ये करते, ये नहीं कि भाई आज यहाँ पे कुछ कर दिए, वहां पे कुछ कर दिया. आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए. हर जगह आपका बिहेवियर शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट. दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप ट्रस्ट. अगला एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट. इट डील्स विथ हाउ लीडर्स कैन बिल्ड ट्रस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी, इसमें हमारे पास जो भी मैनेजर्स है, जो लीडर्स है कंपनी में, वो कैसे अपने अपने कोलीग्स या अपने जो जो रिपोर्टीज है उनके साथ किस तरह वो अपना ट्रस्ट डेवलप करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं. इसमें मैं क्लासिक एग्जांपल एक दो देना चाहता हूँ. मैं आजकल जब आफ्टर डिवीजन 3 में आने के बाद ना, बहुत सारा इंटरेक्शन हो चुका है, होने लगा है सबके टीम मेंबर्स के साथ. एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि द काइंड ऑफ रिलेशनशिप
or the trust the people have in their managers. There are few examples which I'll tell. There are very strong managers we have, like Mukesh ji hai, unke team members Amit ho jaye ya Abhijit ho jaye ya Sanjay ji ho jaye, the kind of trust they have towards Mukesh. Similarly, jaise Kapil hai, Kapil have so much of trust in Neeraj. Similarly, in South, if I take under Arun and Jimmy's leadership, the kind of trust the team members have towards them. Similarly, Yagnesh, the kind of trust his team members have towards him. हाँ, मेरे को मैंने commit किया भाई, मुझे करना है. So that is something which they make sure that their managers are being taken care of. They started trusting them so much. So this has been built as a leadership trust. वही organizational trust बोलते हैं. Then होता है market trust. It reflects the trust customers, investors, and others in the marketplace have in the company. ये बहुत important चीज है, especially when we are in sales. We have to ensure that the end customer is taken care of. I have many examples where I can be a bit harsh also, saying that customer के पास problem आ गया तो भाई हम पतली गली से, we just move out from that area. We will not turn over. And wherever people have shown trust towards the customers or help the customers, market mein reputation un area ka is really great. We have lot of hospital, lot of direct customers, but if you're not able to develop that trust, then there is no point in about the company or the market or the reputation. So this is another important aspect. Market trust has to be built. The trust can be investors, market में जो customers है, इन पे हमें भरोसा लेके आना ही पड़ेगा. वो कैसे आएगा? अगर आपका commitment proper होगा. When you are committed to your customers in the proper way. Today you say, okay sir, आज मैं आके सर्विस करके जाता हूँ. एक इंस्ट्रूमेंट डाउन पड़ा है. अगर आप वो टाइम में उनको अगर सर्विस देते हैं, तो that time the trust from the customer will definitely go up in you, in our organization. So as we are working in sales and service, we have to ensure that the customer's trust is to be built. The market trust has to be built in. Next is societal trust. This is about creating values for others and society at large. ये एक चीज मैं थोड़े दिन पहले की बात है, एक 4 साल पहले का था, मैं जब फैमिली के साथ चेन्नई में रह रहा था. But sir called me, एक दिन आके मेरे को बुलाते हैं. But sir called me and told, Shaji, there is one cover is there. Can you go along with your family and go and give this cover to that institution? आप believe नहीं करोगे, that institution was the old age home. And I went along with my family and I have handed over this check. Actually, it was a check from the company side to the society. Believe me or not, the kind of love, affection, trust they have shown by accepting them. Then I took my kids around the entire campus. It was so amazing and thing that we are able to create such kind of social relationship or social trust within the society where we are living. So this is another important aspect कि एक ट्रस्ट, एक भरोसा है यार. जिस तरह से वो हाथ जोड़ के हमारे सामने ये करते हैं ना, that was so amazing to happen, and my kids were so happy to see that, because these are things which add value to the society. So going further, जैसे हमने बोला, first wave self trust, we'll start understanding more deeper about it. Actually self trust का 4 core areas है. पहला core area है integrity, next is intent, capability, result. हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सेल्फ ट्रस्ट में इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है. फिर मैंने बोला इंटेंट बहुत जरूरी है, कैपेबिलिटी एंड रिजल्ट. सेल्फ ट्रस्ट इज ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी. इट इज अबाउट डेवलपिंग ऑल द 4 कोर एरियाज. हाँ, अभी हमको खुद को ये पूछना पड़ेगा भाई लोग, दैट डू आई ट्रस्ट माई सेल्फ और एम आई समवन एल्स कैन ट्रस्ट. ये 2 क्वेश्चन आप खुद के मन में सोचिए. आई जस्ट गिव अनदर सेकंड, 1 second पॉज हियर. जस्ट थिंक अबाउट इट. राइट गाइस, डू आई ट्रस्ट माई सेल्फ? आप खुद सोच के खुद ही आंसर करिए. और
मैं ऐसा इंसान हूं जो बाकी कोई मुझ पे भरोसा कर सकता है नहीं। दीज आर टू, ये हम बोलते हैं ना, जागरण है ये हमारे लिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। गोइंग फर्दर, व्हाट इज इंटीग्रिटी? मीन्स honesty and telling the truth in the process, leaving the right impression। मतलब हम लोग जो सच्चाई और जो वफादारी जो बोलते हैं ना, इन द प्रोसेस, वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसमें चार तरीका होता है। एक होता है कॉन्जरेंस। कॉन्जरेंस क्या होता है? मतलब कि मेल, व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन इंटेंट एंड बिहेवियर। इरादा और व्यवहार के बीच में कोई गैप नहीं है। when there is no gap between intent and behavior, what you are intending to do and how is your behavior, आपका इरादा और व्यवहार के बीच में कोई भी गैप नहीं है। humility, a humble person is more concerned about what is right than about being right, about embracing new truth rather than defining outdated positions, recognizing contribution rather than being recognized for making things। हाँ, एक हम्बल इंसान क्या रहता है ना, एक जो हम्बल सा रहता है वो कभी भी ये सोचता है कि क्या है राइट, क्या चीज सही है, ताकि दिखावे की सही नहीं, जो एक्चुअल में सही है, जो हकीकत है। तो समझ रहे हो ना? करेज, मस्ट हैव करेज टू डू द राइट थिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें करेज होना चाहिए कि भाई क्या सही है। अगर कुछ भी तकलीफ हो मार्केट में, कुछ भी प्रॉब्लम हो फील्ड में, लेकिन ये जो करेज होती है ना, हमें सही करने के लिए करेज होना मांगता है। ओपननेस, इट इंस्पायर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ए क्लोज माइंड सेट विल फॉस्टर सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट। हाँ, these are some important aspects in the market also we see। openness जैसे बोलते हैं ना, भाई सही है गलत है जो भी है, यू हैव टू टॉक ओपनली टू योर peers or your managers or your colleagues or whatever it is, so that will increase the trust। क्यों ना हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं बताएं, क्यों बताएं, या बाद में बताएं। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी ओपन इनफ टू बिल्ड इन ट्रस्ट। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटेंट, इंटेंट क्या होता है? इंटेंट ग्रोस आउट ऑफ कैरेक्टर। People usually distrust us because of the conclusion they draw about what we do। हाँ, ये इंटेंट जो कैरेक्टर का, अपना कैरेक्टर के ऊपर होता है। समझ रहे हो ना? कैरेक्टर के ऊपर होता है इंटेंट। जैसे बोलते हैं ना, चरित्र, अपने चरित्र के ऊपर होता है। दिस इज बिकॉज एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं कि हाँ उसने, उसके ऊपर भाई यही है, ये एक बॉटम लाइन बना देते हैं, क्योंकि हम लोग उन पे भरोसा नहीं करते। वो कुछ भी करे, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। It is important for us to actively influence the conclusion others draw by declaring our intent। हाँ, आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा कि भाई मैं यही चाहता हूं, मैं ऐसे ही चाहता हूं। आपको, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर इंटेंट। आपको क्लियर बताना पड़ेगा। अगर हम टारगेट लेते हैं या कमिटमेंट करते हैं, क्लियर बताना पड़ेगा भाई हम इतना करेंगे। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंट। इंटेंट हैज थ्री डायमेंशंस, एक मोटिव, एक एजेंडा और बिहेवियर। मोटिव क्या होता है? इट इज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग व्हेन इट इज लाउडेबल। ट्रस्ट इंक्रीजेस। Agenda, it grows out of motive. The agenda that inspires the greatest trust is genuinely wanting what is best for everyone involved। हाँ, पहला अपना एक मोटिव होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है। समझ लीजिए आज हम लोग बोल रहे थे नेक्सस फॉर्म किया हमने, तो नेक्सस का हमने 20 करोड़ का टारगेट लिया। हाँ, ये हमारा मोटिव है, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए हम सब राजी हुए। दैट इज द मोटिव और वी थॉट दैट इट शुड हैपन। एजेंडा, हाँ, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ एजेंडा बनाना, प्लानिंग करना पड़ता है। ये प्लानिंग प्रॉपर करने से ये ट्रस्ट बढ़ता है। जब सब इन्वॉल्व होके करेंगे, then that agenda will be successful। behavior देखिए, behavior is a manifestation of motive and agenda। the behavior that best creates credibility, inspires trust in the best interest of others। ये behavior क्या होता है? ये motive agenda का combination है। जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं, ये अगर हम तीन चीज हमारे माइंड में आ गया, मोटिव, एजेंडा एंड बिहेवियर। हमने सोचा, हमने नेक्सस बनाया,
उसको हमने एक टारगेट बनाया। तो हम अगर हर हर एम्प्लॉय सोचेगा कि हमें करना है, हमें इसी तरह इसको अचीव करना है, तो इसके हिसाब में आपका बिहेवियर भी चेंज होता है मार्केट में। जब आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर्सों को मिलने जाते हो, वो टाइम में दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लाइक इट इज गोइंग टू शो। अगर आपका मोटिव और एजेंडा सही है, आपका बिहेवियर सही रहता ही रहता है, उसके हिसाब में आप जाके प्रेजेंट करते हो। Next is capabilities. Our capabilities build trust of others when any task is involved. Our capability give us self-confidence that we can do what is needed to be done. हाँ, ये जो कैपेबिलिटीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो हर इंसान में अपना अपना एक कैपेबिलिटी होता है। हम बोलते हैं ना यार उस बंदे में कैपेबिलिटी बहुत है, उसके लिए उसका टैलेंट, कैपेबिलिटी इंक्लूड टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज एंड स्टाइल। हाँ, एक एक करके देखेंगे। अगर टैलेंट क्या होता है, टैलेंट यूजुअली हम बोलते हैं ना, इट्स बॉर्न, गॉड्स गिफ्ट बोलते हैं, जस्ट नेचुरल गिफ्ट है, स्ट्रेंथ है टैलेंट। एटीट्यूड होता है, दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवर वे ऑफ सीइंग एज वेल एज आवर वे ऑफ बीइंग टुवर्ड्स वर्क लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट। आप जिस तरह एटीट्यूड हम बोलते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड जिस तरह से होना चाहिए, हम अपने हर काम में, अपने लाइफ में, अपने वर्क में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, हर टीम के सक्सेस के लिए, हर चीज के लिए, वो एक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स, दीज आर प्रोफिशिएंसीज दैट द थिंग्स वी कैन डू वेल। स्किल्स होता है, इसे हमें डेवलप करना पड़ता है, हम अपना स्किल्स डेवलप करते हैं। नॉलेज, इट रिप्रेजेंट्स अवर लर्निंग, इनसाइट, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। नॉलेज भी हमें डेवलप करना पड़ता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में। हम बोलते हैं ना इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में क्या देखते हैं हम, उसका नॉलेज लेवल। हाँ, ये मार्केट में कैसा है। अभी मैं कल की बात है, मैं यहाँ पे दिल्ली में भगीरथ मार्केट में गया। मैं एक्चुअली स्पीकिंग आई नेवर बीन टू दिस मार्केट। यस्टरडे इट वाज जस्ट इंटेंशन दैट कि मेरे को जाना है, समझना है क्या होता है। बिकॉज मैं सुना हूँ अपने मोहन सर से और नीरज से भगीरथ मार्केट के बारे में, यार इट्स बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ये है, ऑल दो थिंग्स। एक्चुअली व्हाट हैपेंस देयर, तो मुझे खुद जाके वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, मुझे वो सीखना है कि क्या कर क्या रहे हैं। हाउ इज सच अ बिग ह्यूज बिजनेस हैपेंस देयर, डेली crores and crores of turnover happen in that market. What happens there, how busy people are, how are they talking, how are they managing things. So this is something which you have to learn on your day-to-day basis. Or next important thing is style. It represents our unique approach and personality. हाँ, ये एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है अपने सेल्स कैरियर में। एक स्टाइल बोलते ना, ये दिस इज समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन वी आर मीटिंग आवर कस्टमर्स। द वे यू अप्रोच देम, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये हमें करना ही पड़ेगा। बिकॉज हर कस्टमर की अलग सोच है, एवरी कस्टमर इज डिफरेंट। So in that scenario, your style also has to be different in each and every approach. I hope you people are understanding the capability, the core three capabilities. The core four is results. In considering result, we should ask two questions. What results are we getting? How are we getting those results? ये हमारे सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। हम रिजल्ट्स कैसे लेके आ रहे हैं? You will be trusted if the results are getting in a better way. पहला तो रिजल्ट्स कैसे लेके आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरा है कैसे लेके आ रहे हैं। आपका ट्रस्ट आपके कंपनी के साथ या आपके मैनेजर के साथ डेवलप हो सकता है अगर रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहा है। रिजल्ट कैसे लेके आ रहे हैं, ये नहीं कि भाई सडनली कोई सेल बढ़ गया, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए 150%, 200% अचीव कर लिए एक महीने, वो कारण क्या है, कैसे अचीव किए, आपने माल कहां पे गया। तो हाउ यू आर गेटिंग योर रिजल्ट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। रिजल्ट आना भी जरूरी है, किस तरह से लेके आ रहा भी, इट इज इंपॉर्टेंट। टू इंक्रीज ट्रस्ट वी मस्ट इफेक्टिवली कम्युनिकेट रिजल्ट्स सो दैट पीपल बिकम्स अवेयर ऑफ द सेम। यहाँ पे हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, especially most of the territories where we have to understand how we are getting our sales. उस पे ही ट्रस्ट बढ़ता है। ये नहीं कि आपने 110 कर दिया, 100% अचीव कर दिया, भाई वाह 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 वाह, नहीं। आप कैसे अचीव करें,
ये जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपके मैनेजमेंट को, अपने कंपनी को मिलना बहुत जरूरी है। आज कोई भी आप कोई भी फार्मा कंपनीज देखे होंगे ना, बड़े कंपनी जैसे सन फार्मा, योर लुपिन, ऑल दिस कंपनीज। सी, इसमें क्या होता है, every strip sale from the distributor is recorded, every cough syrup sold is recorded, everything is recorded. They have a stock and sell statement. Every week the statement goes directly to the company. तो इसमें क्या होता है, और आप भी ये भी सोच रहे होंगे, एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल, अभी करोल बाग में इटसेल्फ देयर विल बी 2 or 3 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर एग्जाम्पल। अब नॉर्थ दिल्ली बोलिंग, नॉर्थ दिल्ली में 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो 5 में किसने क्या क्या किया, हर चीज का डिटेल निकलता है। इट मीन्स व्हाट, द माइन्यूट लेवल ऑल्सो दे आर मॉनिटरिंग, एंड दैट इज द ट्रस्ट विच हैज, दे आर वेरी क्लियर कि भाई हाँ, ये मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है। तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि आपने बिजनेस कहां से और कैसे लेके आए। तो दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द ट्रस्ट फ्रॉम विद इन एज वेल एज फ्रॉम द कंपनी साइड। Next wave है relationship trust. In every relation, what we do has got greater impact than we say. हाँ, रिलेशनशिप में ना कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग घर पे, हस्बैंड एंड वाइफ, हाँ जी मैं दिवाली पे आई विल गेट यू दिस, आई विल डू दैट, मैं वो करके आता हूँ, बट इट डजंट डू दैट, वी विल नॉट डू दैट, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। You have in every relation, मैंने बोला ना, we what we do has got greater impact than what we say. हम जो करते हैं उसके ऊपर वो रिलेशनशिप ट्रस्ट बनता है। बोलती पे नहीं बनता है, करने में बनता है। गुड वर्ड सिग्नल बिहेवियर कैन क्रिएट enormous hope. So those words followed by behavior will increase trust dramatically. अच्छी बातें, अच्छी व्यवहार क्या करता है, आपका ट्रस्ट बढ़ाता है। और अच्छे बात के साथ उसका रिजल्ट भी आता है ना, अच्छे बिहेवियर के साथ, वो और आपका ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है बहुत ही जल्दी। सो कोवी लिस्ट 13 बिहेवियर्स दैट विच हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट। हाँ, एज पर ऑथर के हिसाब में क्या है ना, वो 13 बिहेवियर ऐसा उसने लिस्ट किया है जिसमें 5 बिहेवियर इनिशियली फ्रॉम द कैरेक्टर, 5, जिसमें 5 है कैरेक्टर वाले, 5 है कंपिटेंस वाले, और 3 है कैरेक्टर एंड कंपिटेंस वाले। मतलब चारित्र पे है 5, आपके योग्यता पे है 5, और लास्ट के 3 जो कैरेक्टर उसने डिफाइन किया है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब चरित्र और योग्यता का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं हम क्या है। बिहेवियर 1, स्ट्रेट टॉक। 2 is demonstrate respect. 3 is create transparency. 4 is right and wrong. 5 show loyalty. मतलब ये किस पे आ गया, चरित्र पे हो गया ये जो फर्स्ट 5। द नेक्स्ट 5 is your competence, like deliver results, get better, confront reality, clarify expectation, practice accountability. And the last 3 are the combination of both: listen first, keep commitments, extend trust. तो इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ऊपर नीचे क्या क्या होता है। देखिए, ये थोड़े अच्छी, मतलब यू कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट हैपेंस इन आवर डे टू डे बिहेवियर्स। बिहेवियर 1, हम बोलते हैं ना, टॉक स्ट्रेट। टॉकिंग स्ट्रेट वे कैन गो ए लॉन्ग वे इन इंस्पायरिंग ट्रस्ट। हाँ, आप सीधी बात करो भाई, सीधी बात करने से एक ट्रस्ट लंबा दूरी तक जाता है। इसका ऑपोजिट क्या है मालूम, हम लोग झूठ बोलते हैं या हम उसको डिसीव करते हैं। वी लाई और वी डिसीव। और इसका काउंटरफीट भी है। काउंटरफीट बिहेवियर मतलब क्या है, एक नकली व्यवहार। मतलब हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखते हैं ना, जैसे बच्चन जी का गाना है, अब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखता है, तो दैट इज समथिंग लाइक ए काउंटरफीट बिहेवियर। दिस इज अ बिहेवियर इज बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब हम टॉपिक में नहीं बात करेंगे, हम घुमाते रहेंगे, विथ होल्डिंग इंफॉर्मेशन, डबल टॉक, फ्लैटरी, टेक्निकली टेलिंग द ट्रूथ बट लिविंग ए फॉल्स इंप्रेशन। ये जो घुमा फिराओ जो कैरेक्टर ना, इसको हम काउंटरफेयर बिहेवियर बोलते हैं। ये भी होता है क्योंकि कोई भी एक बात करने का हम सीधी बात नहीं करते हैं। दूसरा होता है ऑपोजिट, उसकी झूठ बोलते हैं। तीसरा है कि सीधी बात नहीं करते, हम टेढ़ी मुंह से मतलब घी निकालना जानते हैं। तो ये एक कैरेक्टर है बिहेवियर 1, जैसे स्ट्रेट टॉक में। अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट। हाँ,
वी मस्ट शो रेस्पेक्ट, फेयरनेस, काइंडनेस एंड लव टू ऑल इंडिविजुअल। हाँ जी, हर इंसान को रेस्पेक्ट देना चाहिए। आप उनके साथ सीधा रहिए, काइंड से रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑपोजिट बिहेवियर इज शोइंग डिसरेस्पेक्ट और नॉट शोइंग पीपल वी केयर। हाँ भाई है, चलो, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। और इसमें एक, जैसे बोलो ना, नकली बिहेवियर क्या है? ए काउंटरफेट इज डेमोन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट इज टू फेक रेस्पेक्ट और कंसर्न, और शो रेस्पेक्ट कंसर्न फॉर समवन, दोस हु कैन डू समथिंग फॉर यू बट नॉट फॉर ऑल। हाँ, रेस्पेक्ट, भाई मेरे को यहाँ काम आ रहा है तो उसको मैं रेस्पेक्ट करूंगा। इफ आई एम एबल टू गेट माई वर्क डन, आई विल रेस्पेक्ट हिम। अदरवाइज इनसे मेरे को काम नहीं है, मैं उसके साथ रेस्पेक्ट नहीं करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को रेस्पेक्ट जो देना और लेना होता है ना, वो सीधे दिल से करना चाहिए, बाहरी दिखावा। अब मैं बहुत बार देखा हूं, कभी कभी हम लोग पुलिस के साथ क्या काम करने जाते हैं ना, व्हेन वी आर इन द फील्ड, देख, अरे सर जी नमस्कार, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, झुकना, वो ये, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, इट इज जस्ट ए शो पुट ऑफ। हम समझ सकते हैं, आप भी जानते होंगे, मार्केट में जब आते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास या अपने कोलीग्स के साथ ही, बहुत सारे टाइम में हमने ये देखा है कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, उसकी जरूरत नहीं। रिस्पेक्ट इज समथिंग विच हैज टू कम फ्रॉम योर हार्ट, इट इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू शो। सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द थर्ड बिहेवियर? क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। ये चीजों से हमारी ट्रस्ट, कैरेक्टर मालूम चलता है। ये कैरेक्टर है, पांच वाला पहला पांच कैरेक्टर पे रिलेटेड है। क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, दिस इज अबाउट बीइंग ओपन, रियल एंड जेन्यून एंड टेलिंग द ट्रूथ इन द वे पीपल कैन वेरीफाई। आप ओपन रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, जेन्यून से बात करिए, तो कि पीपल, लोगों को आप पे विश्वास बढ़े। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होनेस्टी, ओपननेस, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ये प्रिंसिपल क्या है? अपना हॉनेस्टी है, ओपननेस है, आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर ये डिपेंडेड है, अखंडता पे, जैसे बोलते हैं ना। द ऑपोजिट ऑफ बिहेवियर इज टू हाइड एंड कवर। हम बहुत सारी चीज छुपाते हैं। दिस इंक्लूड हिडन एजेंडाज, हिडन मीनिंग, हिडन ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस इन द मार्केट। हमारे डे टू डे लाइफ में अपने कॉलेज के साथ, हर एक के साथ ये होता है। बहुत सारी चीज लोग बताते नहीं है, छुपाते हैं। वो आज या कल बाहर निकलता है, तब क्या होता है? यू विल स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट ऑन देम। Once you start hiding things, covering up things, कुछ भी बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ स्टोरी निकाल देते हैं। इसका काउंटरफीट क्या है? इसके एक इल्यूशन बनाता है। हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं, सीमिंग रादर देन बीइंग, मेकिंग थिंग्स अपीयर डिफरेंटली देन दे आर रियली आर। हम एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि हम बहुत ही बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन अंदर से कुछ और, जैसे मैं पहले बोला, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखता है। Next are rights and wrong. It's making up and doing what we can do to correct our mistakes. This behavior is based on principle of humility, integrity and restitution. The opposite is denying or justifying wrong. हाँ, क्या सही है क्या गलत है भाई, आपको, we all have to accept that. हमने गलती किया है, we have to correct the mistake. Here you have to be you have to understand one thing. Mistakes can always be forgiven. गलतियां हर इंसान से होती है, गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर, देयर इज समथिंग लाइक, गलतियां तो एक होती है, दूसरा है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि गलतियों पे गलतियां करें। उसको अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं ब्लंडर। हम गलती कर रहे हैं, गलती पे मालूम होकर भी गलती कर रहे हैं, वी आर नोइंगली वी आर डूइंग द मिस्टेक, दैट इज ब्लंडर। तो देयर वी हैव टू पनिश। हमें जानकारी है यहाँ पे हमारा कंपनी का पैसे फंसने वाला है, हम जानते हुए भी उसके ऊपर हम ये करते हैं, दैट इज द टाइम इट इज कॉल्ड एज ब्लंडर। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द ऑपोजिट इज डिनाइंग और जस्टिफाइंग रॉन्ग्स। हाँ, हम गलती करके उसमें आर्ग्यू करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, ताकि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि इसमें दो चीज अपने दिन में होता है, एक ईगो होता है, एक प्राइड होता है। यार मैंने, अगर मैं उनके सामने गलती मान लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी कॉमन, एवरीवन हैज गॉट ईगो एंड प्राइड, टू दे विल, टू प्रोटेक्ट दैट ईगो एंड प्राइड ना, वी विल ट्राई टू जस्टिफाई द रॉन्ग थिंग्स। अपना ईगो और प्राइड को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम गलतियों को भी सुधार, मतलब उसको भी हम कवर करने के लिए देखते हैं। डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट क्यों होता है? ये आर्ग्यूमेंट होने का कारण यही है, अपना ईगो और प्राइड को हम छुपा नहीं सकते।
उसको हम नीचा नहीं कर सकते हैं। और इसका दूसरा व्यवहार क्या है, मतलब जो अंदर से बाहर वाला, ट्राइंग टू हाइड ए मिस्टेक एज ऑपोज टू करेक्टिंग इट। हम अपना गलतियों को छुपाते रहेंगे। गोइंग फर्दर, शो लॉयल्टी। This is based on the principle of integrity, loyalty, gratitude, and recognition. We must give credit to others, acknowledge them for their part of bringing up results. हाँ, as managers हमें एक चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि जिसने जो काम किया है उसको उसका आपको उसको उसका रिकग्निशन और उसका ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। आज हम बोलते हैं, अभी फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट मार्केट, नॉर्थ ईस्ट मार्केट एक 6-7 साल पहले और आज के तारीख में भी लीजिए, जब बेनजीत जी काम करते हैं और या तो दिलीप दा काम करते हैं, तो देर इज अ काइंड ऑफ, हम लोग, दैट एंटायर बेल्ट इज बीन डेवलप्ड बाय दीज टू पीपल, एक्चुअली स्पीकिंग, एंड काइंड ऑफ respect what we have towards them is immense. Reason is because, see, that is an area which is actually far away from all travel. देखो, अगर मेरे बात करना, मैं पूरी साल अगले, हम लोग कितनी बार वहां गए काम करने के लिए, कोई भी जो मैनेजर या कंपनी से, बहुत कम, बट द कंपनी ट्रस्ट देम वेरी मच। हाँ, ये कर देंगे भाई, अपना टारगेट पूरा साल का वो कर देंगे, वो लोग अपना हर चीज कर देंगे। हाँ, अपना पैसा नहीं डूबेगा। दैट इज समथिंग विच वी हैव सीन इन दैट मार्केट। And anytime, whenever I talk to Mohan sir about the discussion coming about the North, अरे problem नहीं है, Banijit है, he will handle it. So that is a trust which we have developed in that area. The opposite is giving credit, is taking credit. हाँ भाई, किसी और के मेहनत पे तुम क्रेडिट लेना चाहते हो, इसका लॉयल्टी का दूसरा साइड है, ऑपोजिट साइड है। और काउंटरफेट कैसा है, इज गिविंग क्रेडिट, अपियरिंग टू गिव क्रेडिट टू समवन when they are with us, but downplaying their contribution and taking the credit when they are not around us. ये एक बिहेवियर भी हमने बहुत कॉमनली देखा है सबके, कि जब साथ में सब बैठे, अरे भाई हाँ, वो आदमी अगर मेरे साथ है, मैं उसको बोलूंगा, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा क्रेडिट, बहुत अच्छा काम किया, आपके कारण ही ये सक्सेस हुआ। लेकिन जब वो इंसान नहीं सर ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, ये तो मेरे कारण हुआ है, तो ऐसा भी बिहेवियर है। तो ये था अपना 5 जो कैरेक्टर रिलेटेड है, समझ रहे हो, कैरेक्टर रिलेटेड ये 5 था। अब नेक्स्ट क्या है, अपना कंपिटेंसी के ऊपर। कंपिटेंसी में क्या है, पहला आता है डिलीवर रिजल्ट्स। दिस बिहेवियर ग्रोस आउट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। हाँ, रिजल्ट्स डिलीवर, ये किसमें डिपेंडेड है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपका परफॉर्मेंस पे। द ऑपोजिट बिहेवियर इज परफॉर्मिंग पोअरली और फेल टू डिलीवर। हमको मालूम है, ये अगर परफॉर्म नहीं करता है, डिलीवर नहीं करता है जो दिया हुआ टारगेट है, उसका ऑपोजिट। काउंटरफेट क्या है, एंगेजिंग इन एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट। हाँ, अपने को रिजल्ट आया नहीं, लेकिन हम घूमते घुमाते रहेंगे, भाई मैंने वो था, मार्केट ये था, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, हर चीज का बहाना निकालते रहेंगे। Results are always just based on expectation. In each situation, we have to define the result that we build trust and deliver those results consistently on time within the budget. Results क्या है? Based on expectations. In each situation, we have to define the result. Result को हमें define करना पड़ेगा, ताकि define करने से ही trust बढ़ता है, and result को deliver भी करना पड़ेगा। आप एक टारगेट ये करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उसको आपको डिलीवर भी करना, अचीव भी करना पड़ेगा। और ऐसा है कि कंसिस्टेंटली आल्सो यू हैव टू डिलीवर ऑन टाइम विद इन द बजट, एंड टू ओवरकम प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर लीड टू लॉस ऑफ ट्रस्ट। हाँ, हम ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, हम ओवर, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, लेकिन बोल के हम अगर डिलीवर नहीं करते हैं, तो वहां पे भी ट्रस्ट नीचे जा सकता है। With customers, co-workers, we must try to anticipate need in advance and deliver even before the request even come. हाँ, यहाँ पे अपने कस्टमर के साथ या आपके कोवर्कर के साथ आपको पहले ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा भाई, कि what is going to happen, and deliver the result before he starts asking you. So this is most important behavior, that is deliver results. Get better. This behavior is based on continuous improvement, learning and change.
When people see us a learning, growing, and renewing person, they develop confidence in our ability to succeed in a rapidly changing environment, enable us to build high trust relationship and move really fast. ये समझ लीजिए कि हमें अपने हर पड़ाव में we have to learn. Continuous improvement, learning is required to develop, go into the next level में जाने के लिए अपने लाइफ में when you want to grow to the next level, you have to be in a continuous mode of learning. That will build trust within us and within the group or organization. इसका दो काउंटरफेस क्या है? वन हु ऑलवेज लर्निंग बट नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट. हाँ, ऐसा भी है कि भाई आप पढ़ते रह रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है. द सेकेंड इज ट्राइंग टू फोर्स फिट एवरीथिंग वॉट एवर वी आर गुड एट डूइंग. हाँ, हम लोग मतलब वो घुमा फिरा के अगेन फोर्स फिट करने लगते हैं हम लोग जो चीज में अच्छा है. इन सीकिंग टू डू बेटर देयर आर टू स्ट्रैटेजीज दैट विल बी हेल्पफुल. एक है सीक फीडबैक, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. मैंने इससे पहले पे बोला था ना, अगर हम सीक फीडबैक, अगर हम कुछ भी करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं ना, उसका फीडबैक लेना सीखिए. इससे एडवांटेज क्या है? यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग योर सेल्फ. फीडबैक, अच्छा फीडबैक लेने से उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. जो फीडबैक लेंगे उसको देख के हम इंप्रूव कर सकते हैं. वी कैन डेवलप अवर स्किल, वी कैन गेट बेटर. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बहुत जरूरी है. वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हमारी गलतियों से हमें सीखना ही पड़ेगा ताकि हम कुछ अलग करेंगे, अच्छा कर सकते हैं. वी मस्ट एंकरेज अदर्स टू टेक रिस्क एंड टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स. हाँ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क. हाँ, गलतियां होती है, हम रिस्क लेते हैं, गलतियां होती है, फिर वो गलतियों से हम सीखते हैं. जैसे हम सब जानते हैं ना, हम लोग कभी कभी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फेलियर्स हो जाता है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती है. देन नेक्स्ट टाइम वही चीज हम लॉन्च करने जाएंगे तो वी विल बी डबली केयरफुल. एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ. डिवीजन 1 में जब हमने ये सार एनालाइजर अभी पिछले 2 साल पहले हमने जब लॉन्च किया था, प्रॉब्लम्स आ गई थी मार्केट से. उसके बाद फिर नया वाला जब ये सार एनालाइजर हमने लॉन्च किया, हमने देखा कि भाई प्रोडक्ट और रिजल्ट अच्छा है. हमने अपनी पुरानी गलतियों की सीख से हमने नया चीज को जो लेके आए, तो दैट बिकेम सक्सेसफुल. So you have to understand mistakes happens everywhere. But if you have to learning and trying to improve from that, that will give you proper results. Next is confront reality. This behavior is about taking tough issues head on, sharing the bad news as well as good news. हाँ भाई, जो भी है problem, whatever problem comes across, face it on face. I will give one example here. See, I think Mukesh and even Neeraj has seen this place when they were working in Kerala, Trivandrum. Under Arun's leadership, there is a big institution where what happened was the stock has come out from somewhere else in the market. It's a big loss of business, big loss of business. Whatever be it, I don't want to share what has happened, but here what happened was, here rather than getting distress and all those things, what Arun has done, which I really appreciate, he went and had a straight talk with the person in charge there. Sir, you are fine, you are taking it, you take it, but don't come to me for any kind of service and support. I have made this counter, made this business, made this thing on face, on with my hard work, with the services which I was offering you. When he has taken the stock from somewhere else saying that I've got this, you don't expect this kind of support from my side. Then he told, okay, tell me, let me also think about it. Let me also support you on that. So see, you have to understand any problems happen, you have to confront head on. Confronting really implies showing courage, responsibility, awareness and respect. ये आपका वो बोलते हैं ना अंदरूनी ताकत है, करेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप कन्फ्रंट करने से प्लस अवेयरनेस, रेस्पेक्ट सब बढ़ता है. द ऑपोजिट इज इग्नोर और एक्ट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. भाई चले गए, छोड़ो ना यार, क्यों मगरमारी करने का. और काउंटरफेट क्या है? हम दिखाते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वी शो एवरीथिंग दैट वी हैव डन दिस दैट एंड ऑल, बट इट इज जस्ट बाय टॉक. When we openly confront reality, following things happen: open interaction,
creativity improves, capability increases, synergy within the team increases, idea flow freely, innovation, collaboration take place, problem solving process happen. See, this is most important thing you have to understand. When we openly confront reality, तब क्या क्या होता है, आप ओपन, हर चीज में ओपननेस दिखाएंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका इंटरेक्शन लेवल बढ़ता है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है, हाँ ऐसा करेंगे या इस तरह से कर सकते हैं, आपका कैपेबिलिटी बढ़ता है, आपके टीम वर्क में स्ट्रांग होता है. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कन्फ्रंट रियलिटी हेड ऑन, यू हैव टू हैव दैट बिहेवियर. Clarify expectation. हाँ जी. This is based on a principle of clarity, responsibility, and accountability again. The opposite is to leave the expectation undefined, to assume that they have already know or fail to disclose them so that that's not shared. Vision is desired outcome. And the counterpoint is pretending to be clarifying expectation but not doing enough to pin down the specifics, which facilitate meaningful accountability. आपका एक्सपेक्टेशन, कंपनी अपना एक्सपेक्टेशन क्लियरली ये करता है भाई. आप जैसे हम लोग आजकल आजकल हम लोग नए एम्प्लॉयज आर जॉइनिंग इन, देयर लॉट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज हैव जॉइन्ड इन द कंपनी इन लास्ट almost all couple of months or 3-4 months. See, it is very clearly we are defining in the offer letter itself कि भाई this is what is expected from you, this is what is a business expected from you, this is what you are supposed to do. So when the organization is making or clearly defining the expectation, we also as an employees also have to have a clarity in our approach, clearly defining the expectations from your team members, from your distributors. तो आपको clarity रहना बहुत जरूरी है, expectation को clarify करना बहुत जरूरी है, और ये responsibility भी है अपना, और इसमें we have to define that clearly. Practice accountability. There are two dimensions. For the first is to hold ourselves accountable, and other is to hold others accountable. हाँ, हमें जो चीज का हमें अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, हम जो करते हैं ना उसका अकाउंटेबिलिटी हमें लेना पड़ेगा. अगर तुम अपने को लगता है अपना एम्प्लॉय, अपना जो हमारे अंडर में काम करते हैं ना, वो अगर नहीं करता उसे भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा. एवरी पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर हिज responsibilities. Trust results people know that everyone will be held to a certain standards. When leaders don't hold people accountable, it creates a sense of disappointment, inequity, insecurity. अगर हम responsibility, accountability नहीं लेते हैं तो distrust होता है, एक insecurity feeling आता है. When things go and we find ourselves blaming or accusing others, we must take a step back and ask, how can we stop? This is most important, guys. You have to understand, when things go and we find ourselves blaming or accusing, हम लोग ये कॉमन चीज करते हैं ना, अरे वो उसके कारण हो गया, ये इसके कारण हो गया, इन्होंने ये नहीं किया. उस टाइम में आपको एक कदम पीछे हटाना है और सोचना है कि भाई हाउ कैन वी स्टॉप दैट. At work, we must practice accountability by holding our direct deputies accountable for their action. But before that, we must clarify our expectation first, so that everyone knows what they are accountable for and by when. हमें हर जगह में अपना अकाउंटेबिलिटी, हर एम्प्लॉय के साथ उसको अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा. आपका रिजल्ट्स में, आपका परफॉर्मेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका, उसके लिए. लेकिन आपको आपका एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना पड़ेगा. हाँ भाई, जैसे हम आजकल बोलते हैं ना, गोल्स ले रहे हैं. गोल्स क्यों ले रहे हैं? वी आर क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेशंस, and it is our responsibility to ensure that even the team members under you are also accountable for that. Next is listen first. ये अभी आगे अपना combination of character and competence का combination है. Listen first. It is vital to listen first, otherwise we will be acting on assumptions which are totally incorrect, acting in the way that turns out to be embarrassing and non-productive. ये बहुत important चीज है, हमें सुनने की आदत जरूरी है, सुनना पड़ेगा. If you are a good listener, then only you will be a good result-oriented person. You will understand that. The principle of this behavior including understanding, respect and mutual benefit. हाँ, लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि भाई कान खोल के आंख बंद करके माइंड क्लोज करके, नहीं. इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, रेस्पेक्ट बढ़ता है और म्यूचुअल बेनिफिट भी होता है. हाँ, ऑपोजिट क्या है? बात करते रहो भाई, सुनने का कुछ नहीं. और काउंटरफेट है कि हम सुने जैसा एक्ट करेंगे.
क्या करते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, और हम इसलिए ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि लाइक वी आर लिसनिंग बिकॉज वी वांट टू स्पीक. वी आर ओनली शोइंग एज इफ वी आर लिसनिंग बिकॉज वी वांट टू स्पीक समथिंग. तो लिसन फर्स्ट मीन लिसन टू अवर सेल्फ, टू अवर फीलिंग, अवर इनर वॉइस बिफोर वी डिसाइड एंड एक्ट. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. लिसन फर्स्ट मतलब सुनना. इसका मतलब है कि अपने खुद की आवाज सुनो ना, खुद की फीलिंग भी सुनो, आपके इनर वॉइस को भी सुनो बिफोर वी डिसाइड एंड एक्ट. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीप कमिटमेंट्स. दिस इज द क्विकेस्ट वे टू बिल्ड ट्रस्ट. ये कमिटमेंट अचीव करना ही पड़ेगा. ये है द बेस्ट वे टू build trust. To break commitment or violate promise is the quickest way to break the trust. The counterpart is to make commitments that are so vague that nobody can pin us down. Alternatively, we are so afraid of breaking commitment that we don't even make any in the first place. Keeping commitment is based on principle of integrity, performance, courage, and competence. It's a perfect balance of character and competence. I'll tell you, ये बहुत important चीज है. I'll just spend some time in this. सी यूजली आजकल अपना एक जूम मीटिंग चलता है 20 तारीख से 22 2022 23 के बीच में. सी वेयर वी हैव द जूम मीटिंग बिटवीन 20th and 23rd. we'll be asking, भाई how much of target are you going to do? So some examples I'll tell. They will just tell, sir, from this party this much business, this party this much, itna business we are going to do. It's hardly 4 or 5 days left for the sales closing, and sometimes some people hardly even achieve 50% or 40% of what they have committed. See, I can understand month ke pehle mein you have committed something, and due to some problems or something happens in the market, things can go up and down. But with 4 days to 5 days left for the sales closing, on what basis you people give commitment, that I don't understand. Who are not achieving that? There are people who are achieving and keeping it. I'm not denying on that. There are our 70% of the 70 to 80% of the team members keep their commitments. So when you're giving the commitment, why you're giving wrong commitment? It means we will start losing trust on that person. So you have to be very clear. It is just for the sake of giving commitment. Don't do that. You have to be very clear when you're giving this thing. That shows the character of the person and competence of the person. चरित्र और योग्यता इसी पे मालूम चलता है. I might be a bit harsh here, but I have seen a lot of team members not keeping their commitment when they are being asked. So you have to be committed to your work. Is company not committed? Company is also committed. Company time में तंगा देता है ना, 31st को या 1 तारीख को तंगा गिरता है. कंपनी का कमिटमेंट है. एक्सपेंस गिरता है टाइम में, इंसेंटिव गिरता है टाइम में. When company is keeping the commitment, it is our bound responsibility to keep the commitment. So this is very important to build the trust between the employees or employee and a company. Please understand that this is very, very important. I might be hard, but this is a fact of life. We have to keep our commitments. Next is extend trust. हाँ जी, ये क्या होता है? This behavior is based on principle of empowerment, reciprocity, fundamental belief that most people are capable of being trusted, wanted to be trusted, do well when trust is extended to them. ये हमें ट्रस्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, हर बंदे पे भरोसा करना पड़ेगा. करने के बाद हर बंदे पे हम भरोसा करते हैं. एक पर्सन ज्वाइन होता है ना कंपनी में, उस दिन से हम उन पे भरोसा करते हैं कि भाई वो इतना करेगा. सो दिस इज द फंडामेंटल बिलीफ. ये एक रेसिप्रोसिटी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा. इसका ऑपोजिट क्या है? लाइक uphold the trust. Also, contribute. First is extending false trust, giving people the responsibility but not authority to get the task done. तुमने अपने मैनेजर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया या आपके एम्प्लॉय को दे दिया, भाई ये करके आओ, लेकिन तुम उसका अथॉरिटी नहीं देते हो, तो यहाँ पे ट्रस्ट नीचे गिर रहा है ना. सेकेंड इज एक्सटेंडिंग फेक ट्रस्ट, एक्टिंग लाइक वी ट्रस्ट समवन बट वी वोंट डू. तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको आप अथॉरिटी भी देना दीजिए ना, तभी तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, वो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा. तो एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. गोइंग द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट. अभी ये क्या होता है? लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? लोग ना पीपल मैनिपुलेट और डिसॉर्ट फैक्ट्स, पीपल विथहोल्ड और होल्ड इंफॉर्मेशन, पीपल स्पिन द ट्रूथ टू देयर एडवांटेज, नए आइडियाज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं,
मिस्टेक्स जो होता है उसको कवर अप करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जो लो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देर आर मेनी अनडिस्कसेबल, बहुत सारे हम लोग चीज डिस्कस नहीं करते हैं। पीपल टेंड टू ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। हम लोग कुछ ज्यादा प्रॉमिस कर लेते हैं और डिलीवरी बहुत कम करते हैं, एनर्जी लेवल लो रहता है। अब परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, हाई ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में, पीपल आर कैंडिड एंड ऑथेंटिक, लोग बहुत ही ऑथेंटिक है, इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड ओपनली, transparency is practiced value, new ideas are welcome, mistakes are tolerated and encouraged as learning, there are few meetings after meeting, people talk straight and confront real issues, there's a high degree of accountability and high energy level. So we have to build an organization which have got high trust characters, high tech abilities. Then is market trust. Market trust is all about building brand or reputation. This is the trust that make us buy a company product or service. Corporate brands are important not only for companies but also for other organizations, including government, charitable, hospitals, and cities. Brands are judged based on people's perception. When brands are perceived to be trustworthy, they generate a strong competitive advantage for the company. हाँ, एक्चुअली क्या है ना, हर प्रोडक्ट में we all have a behavior. We all think that, Arey, this product is not good, this is not good, that, but still there are products which are lower than quality of some, this thing also are selling. Because the trust which the person has towards the people working, he is confident. अगर हम बोलते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट में मैं दे रहा हूँ आपको, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगा ना, I am there to take care. If they start trusting the people working there, then product moves. Next is societal trust. This we have discussed also to a little part in the earlier stage. Trust is an integral part of a society. It is hard to imagine a world without trust. हर चीज में सोसाइटी में सबको ट्रस्ट होना चाहता है. Heavy costs are incurred by closed or low trust society. In other hand, high benefits are reaped by high trust societies, like those include share knowledge, medical breakthroughs, technology advantage. ये पूरा high trust societies में develop होते हैं. In high trust society, there are more for everyone. हर एक को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, coming to the conclusion, I'm almost on the last slide. Trust is essential for prosperity, joy, happiness and professional success. हाँ जी, ये ट्रस्ट हमें बहुत जरूरी है अपने लाइफ में खुशहाली, उन्नति, खुशियां और प्रोफेशनल सक्सेस लेके आने के लिए. हमें ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डे टू डे लाइफ में. ये पर्सनल में ही, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है. We can, if we can try, establish, grow, extend, and restore trust. Our behavior can inspire trust. अपनी जो व्यवहार है ना, उससे हम ट्रस्ट को बढ़ावा दे सकते हैं. By increasing trust, we can speed up things, cut transaction cost. हाँ, अगर हम अपना ट्रस्ट बढ़ाते हैं ना, तो अपना जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, जो चीज धीरे से होना है ना, वो जल्दी में होने स्टार्ट हो जाएगा. एंड ट्रांसैक्शन कॉस्ट ऑल्सो कम्स डाउन. द स्पीड ऑफ ट्रस्ट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. आपको ये बहुत मानना बहुत जरूरी है. द स्पीड ऑफ ट्रस्ट को हम नीचे नहीं कर, इसको नहीं समझे जैसे मत रखिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने डे टू डे लाइफ, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में. थैंक यू. I would like Prasenjit sir or Mukesh ji, anyone to just talk on certain things about this. Prasenjit sir. Yeah, Shaji. हाँ sir. So it was really good session. You told very correctly multiple things that trust is very important. इसमें हर एक स्टेप में, जैसे हमको भी हमारा फील्ड स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, उनको भी हमारे ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. Main thing what I found is that once they give the commitments of the plannings in SFL planning, if you see, we have seen, you have also seen that some people are there who will give the commitment and they'll honor the commitment. Their Right. trust factor increases. So this is the first step, I think, towards winning the trust within the group, in fact. तो मुझे लगता है जो एक इमीडिएट जो चीज है, जो अबाउट द ट्रस्ट, दैट लेट देम गिव द कमिटमेंट व्हाटएवर दे आर गिविंग एंड लेट देम ऑनर द कमिटमेंट. So that can be the first step towards winning the trust towards the teammates. Okay. So this part only I would like to say immediately what
came into my mind. As you asked suddenly, I was also not prepared, but the Okay. first thing which I felt is very Shaji important. sir, हाँ Shaji sir, sir, हाँ sir, morning sir. uh, I feel you should spend a few more minutes on the slide titled High Trust Organization. Pardon me sir. There is one slide called High Trust Organization. Okay. You didn't spend enough time on that. You Okay. explain it, That please. is the organizational trust, right, sir? This one ना sir, this slide. Yeah, yeah. Okay. यहाँ पे what you rightly said sir, right. See, high trust organization में क्या होता है ना, this is most important thing we have to understand. People are candid and authentic. लोग ना सही बोलते हैं, मतलब they are very, जो बोलते हैं सही बोलते हैं. Informations are shared openly. यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से छुपता नहीं है. हाँ, हमारे पास थोड़े एरियाज है जहां पे इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड ओपनली. वी नो, फॉर एग्जांपल, there is one place, I don't want to always name that area, there is one place where we know every strip where it is going of glucometer. I'm very open and transparent, I'm talking openly here. We know which hospital, what price, what is the thing. Company also knows because they know what is they have been given that price based on that hospital quotation price. Transparency is practiced value. See, that is another thing which we have to always understand about Peerless. We are more than transparent in all our transactions. That is one thing which our distributors encourage us. You have to understand, हम लोग साल के बाद ना जो account statement signature का जो procedure करते हैं, hardly any companies are doing it. So that is the trust what the distributors have gained towards Peerless. आज Peerless का वैल्यू इतना क्यों बढ़ रहा है मार्केट में? Why our distributors trust us? Because we are transparent. हमने कभी किसी का पैसा नहीं खाया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का. We are very clear. If this is possible, this is possible. New ideas are welcome. यहाँ पे आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, there are a lot of new ideas which are being welcomed and implemented. हाँ, हो सकता है आपने आइडिया दिया, आज इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि we cannot implement that. But always the new ideas which are good for the organization is taken care of. Mistakes are tolerated and encouraged as learning. हाँ, इसमें हम लोगों ने सभी ने गलती किया है. आप ये बताओ कि हमारे कंपनी में who has not done a mistake? Mistakes have been done. Company knows that. They have tolerated that. They have encouraged as भाई आगे से मत करना. हम मोहन सर के पास जाते हैं ना कभी कभी, तो बोलते हैं सर ये वाला जरा कर दीजिएगा. तो बॉस बोलते हैं पहली बार देखो, लास्ट टाइम गलती हुआ था, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? The same thing Mohan sir asked, na? Most of them, Neeraj ji, Mukesh ji, anyone, Mohan sir asked, आप responsibility लोगे? Similarly to Arun or to Yagnesh, or Yagnesh also, na? Last time he went and asked for something, clearly Mohan sir has told, will you take the responsibility? So this is what it is, happens usually in our organization also. There are few meetings after meeting. हाँ, हमारे meetings होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, वो कम होता है. People talk straight and confront real issues. हाँ, हम लोग सीधी बात करेंगे ना, भाई मुझे यही है, ये मेरे को मिला है, यही है सिचुएशन. इससे we have to run our business. There is a high degree of accountability and high energy level. हाँ, यहाँ पे accountability बहुत जरूरी है. इसलिए हम लोग देखें ना, कभी भी मोहन सर हमसे क्या बात करते हैं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मुकेश और हम लोग जब कभी कभी बैठते हैं, रंगनाथ जी को वही पूछते हैं, विल यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी? ओके. नीरज को भी पूछते हैं, बैनर्जीत को भी पूछते हैं, बैनर्जीत आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? वहां पे ये करना है, ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? यस. सी, दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन अ हाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन. बट सर, एनीथिंग वुड लाइक टू ऐड हियर सर? Nothing. Thank you. Okay sir. Yeah. See, what I'll say, Shaji, one very classical example. हाँ जी. You remember that in the meeting, I'll take the example of Agnesh Sharan actually. हाँ. We were discussing about 1500 pipettes order from Tamil Nadu. You just told, I was remembering. Right, right. So what I said in the meeting, impossible. Tamil Nadu हाँ. से हो ही नहीं पाएगा. इतना Right. पिपेट कभी जिंदगी में आया ही नहीं Tamil Nadu से. Impossible है. I'm assuring it will not happen. If it happens, let us have a dinner together, right? Something like Right. that I commented, and I thrown a bait to Ranganath ji. Right. Correct. At last, Agnesh Sharan made it. Right. So what happens? He won the trust, right? Right. He has He won won the trust trust. of the team. Not only my trust, means
I was making this comment in the PMS meeting, right? Where every Right, other stakeholders were there, were the sales stakeholders, right? right. So in I front agree of with you. everyone, he earned that trust, and tomorrow he'll be believed. So that is Right, what is possibly winning the trust step by step. आप जब ये बता रहे थे organizational trust, I was thinking about him, of right. that he made it. So kind of like Right, this. very, So, very true. There are a lot of live examples, sir. The kind we started trusting yeah, people, there are a lot of live examples which yeah, happens in your day-to-day life. I correct. think Shaji, Ishwar Okay. wants to say something. Yeah, yeah, Ishwar. Yeah, sir. Shaji, sir, first of all, thank you so much for the wonderful presentation. I'm lucky to hear that second time because I was already part of this. Right, Ishwar. See, because sir, as you know, trust is not it's a vast subject and it differs on situations, it differs with people, relationship, and everything. But coming to what the purpose of this is, like coming to organizational structure, thanks to Bhatt sir, like he highlighted that slide again. Right. See, enough to work with all the points you quoted, no, in that kind of similar situation for a very, very long time. So to summarize, like what I want to say in this forum is, like your intent should be good always, Right, and right, as much as possible be transparent. It doesn't mean that you should throw in unwanted information. You should be transparent to the situation, what is there, and being responsible. That is more important for the business. It compromises so many things. Being responsible means if you give commitment, be responsible for the commitment. If you do some action, be responsible for the action. Be responsible for team. So right. responsibility is very, very important in every aspects of the life. So if you are responsible, then things will be easier, and no you can build trust with anybody. Yeah, So I agree, Ishwar. See, here what you're rightly saying. See, what happens is many times we have felt in the field, any problem comes across, no, you just lift your hand and move away. yeah, अरे यार वो प्रोडक्ट खराब है कंपनी सपोर्ट नहीं करता वो नहीं करता एंड दे ट्राई टू जस्ट इवेट फ्रॉम दैट सिचुएशन yes. that is something which that will then naturally will not have that trust on the person also because you have to confront in front and you have to take it head on. That is more important. And one more thing, sir, to build trust with your field people, like no frontline people, the manager should allow them to make mistakes. So Right, people what to do, generally tendencies like they score out of their others' mistakes. That right, people, okay, you have to mold them, and you have to watch them. You have to allow them to take calculative risk. You should be behind that and see what is whether he is doing right or wrong. So you have to, if you do like this, now people will come forward and take responsibility. They see everyone is our purpose coming to company to work and grow. So in this right. process, they're willing to take responsibility, but they'll have the fear of taking responsibility. Because if anything goes wrong, what company will say, what my boss will say, I may get Hmm. punished. So you should not give bigger responsibility. At least you should give them smaller responsibility and make them habituated and teach them how what are the no points you have to look out before taking risk. So I should say people should encourage to take risk. So when they succeed, now their confidence level grow and they'll take responsibilities. I agree with you. True, very true, Ishwar sir. Thank you.